Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Numan. I welcome you all to this new series of Intercom 2000. Intercom 2000 is a very useful book for learning English language. In this book, we will be talking about 4 skills, such as reading skill, listening skill, speaking skill, and writing skill. We will be talking about these 4 skills in this book. In our today's lecture, we will be talking about some important points which are given here. In today's lecture, we will learn subject pronouns, demonstrative pronouns, be verbs, and indefinite articles. Whenever you learn these points, there will be no problem for you in the next videos. You will not face any difficulty in the next classes, right? So first we have to know about pronoun. What does it mean, pronoun? First, we have to learn this word. This word, pronoun, is the combination of 2 words. Pro means instead of. Instead of. Noun means naming word. Noun means naming word. प्रोनाउन को हम उर्दू में इसमी ज़मीर कहते हैं। इसमी ज़मीर जो कि नाउन के बजाय इस्तेमाल हो जाए, इसको हम कहते हैं pronoun. Basically, as I said, pronoun is the combination of 2 words. ये 2 अल्फाजों का मजमुआ है. Pronoun is the combination of 2 words. Pro means instead of. और instead of को हम उर्दू में कहते हैं के बजाय. Instead of mean के बजाय. Noun mean it is the name of a person, place, thing, animal, and idea. इसको हम कहते हैं noun. In a few words, we can say it is a naming word. ये एक इसमी नाम है. ये एक इसमिया नाम है. दुनिया में जो भी चीज हो, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है. दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ख्वाह वो इंसान हो, जानवर हो, चीज हो, किसी जगह का नाम, किसी प्लेस, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, दुनिया में जो भी कोई चीज हो, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक खास नाम रखा हुआ है. इसको हम कहते हैं naming word. It is a naming word. In short, in a few words, simply we say it is a naming word. ये एक इसका नाम है. इसको हम कहते हैं noun. ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, pronoun is a word. Pronoun एक ऐसा लफ्ज है जो noun के बजाय इस्तेमाल हो जाए, नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन. Pronoun means instead of noun mean it is a naming word.
definition of pronoun. Pronoun is used, आप इसको लिख सकते हैं, pronoun is used instead के बजाय, instead of a noun, ये noun के बजाय इस्तेमाल होगा. Pronoun is used instead of a noun. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसकी अहमियत, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह बता दें. तो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, we use pronoun instead of a noun to avoid the repetition, to avoid the repetition. ठीक है ना, ताकि तकरार को खत्म करें. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का नाम लिया, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आपने किसी का नाम लिया, बार बार उस शख्स का नाम लेना, ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ में, ये इसे में या कहीं अमर, ये अच्छा नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, वी स्टार्टेड एन एसे अबाउट काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. Once we mention the name of Qazi Azam Muhammad Ali Jinnah, that is enough for all essay. पहली दफा हमने काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जिक्र किया, उनका नाम लिया, ये जो है ना बस काफी है. बार बार उनका नाम लेना ये ऐसे में अच्छा नहीं लगता. तो look at here, मेरे बात कहने का मतलब ये हुआ, pronoun is used instead of a noun to avoid the repetition, ताकि तकरार को, बार बार दोहराने को, बार बार नाम लेने को खत्म करें. इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं pronoun. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं अली के मुताबिक. ठीक है, अली is a good boy. तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ठीक है ना, I ask question to you from you. Ali is a good boy. अब मैं अली के मुताबिक एक दूसरा जुमला लिखता हूं, तो क्या आप दोबारा नाम लेना पसंद करेंगे? क्या मैं इस तरह लिखूं, अली lives in नौशहरा. अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अली इज अ गुड बॉय, अली lives in नौशहरा. Ali reads in 5th class. अब आपका क्या होता है? मैंने एक दफा ना, हम बात किसके मुताबिक बात करते हैं? हम बात करते हैं अली के मुताबिक. हमने जाना कि बात किसके मुताबिक हो रही है. About whom we are talking about in this sentence? We are talking about Ali here. एक दफा मैंने अली का नाम लिया, ये अगले सेंटेंसेस के लिए, पैराग्राफ के लिए, इस तमाम इसे के लिए ये जो है ना कॉपी है. अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है. अली lives in नौशहरा, अली नौशहरा में रहता है. अली reads in 5th class, अली 5th क्लास में पढ़ता है. अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जुमले अच्छे लगते हैं?
जब मैंने बार बार अली का नाम जिक्र किया? क्यों मैं इसको दोबारा लिखूं? इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि whenever I read it again here, it doesn't suit well. It doesn't look nice. We have to omit these things. We have to remove these names from here. Instead of this name, we have to write here he, which is our pronoun. अब हम लिखेंगे इसके मुताबिक he, ठीक है? Ali is a good boy. He lives in Nashara. He reads in 5th class. जब हमने एक दफा अली का नाम लिया, it is a noun. It is the name of a person, place, or sorry, it is a noun. Ali is a noun. Ali is a good boy. और हमने जिक्र किया वहां पर कि pronoun is a word which is used instead of a noun to avoid the repetition. हमने वहां पर जिक्र किया pro means instead of, जो noun के बजाय इस्तेमाल हो जाए, ठीक है? अब हम एक दफा हमने एक जिक्र किया अली का, अली इज अ गुड बॉय, तो दोबारा नाम लेना ये अच्छा नहीं लगता। हम इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? अली इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन नशरा। अब तो बात समझ में आ गई कि किसके मुताबिक बात हो रही है, ठीक है ना? क्योंकि हमने यहां पर जाना कि अली के मुताबिक बात हो रही है, तो दोबारा उसका नाम लेना ही अच्छा नहीं लगता। अली इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन नौशहरा, ही रीड्स इन 5th क्लास। तो जब भी हम ही इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे लगेंगे, ठीक है? जब भी हम ही इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, और हम जान सकते हैं यहां पर कि किसके मुताबिक बात हो रही है। इट रिवर्ट्स बैक टू अली, अली के मुताबिक बात हो रही है, ठीक है ना? सो फॉर आवर इजीनेस हम अपनी आसानी के लिए प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही अली के मुताबिक बात हो रही है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बार बार नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि तकरार को खत्म करें। और ये सिंपल वर्ड से इसको लिखना जो है ना बहुत ज्यादा आसान काम है। क्यों हम नाम को दोबारा दोबारा लिखें? बार बार हम जो है ना नाम को दोबारा लिखें, ये अच्छे नहीं लगते, ठीक है? तो इट वाज आवर टुडे क्लास अबाउट pronoun. Inshallah, tomorrow we will talk about subject. This was our today lecture. Pronouns, I would like to say in English, pronoun is a word which is used instead of a noun to avoid the repetition. Basically, pronouns are two words. Pronoun are two words, pro and noun. Pro means instead of, noun means it is a name word. Whenever we are using a word instead of a noun, that is called pronoun. Why we use pronoun? What is the reason? What is the logic behind that? In simple words, whenever we mention the name of someone, again mention the name of that person, it doesn't suit well. That is why we are using the word pronoun. Share these videos to your friends, relatives, colleagues, through WhatsApp, Messenger, and Facebook. Also, you should subscribe our YouTube channel, Learn English Grammar with Numan. Thanks a lot of you. Thanks all.